Hello friends, this video we are recording to discuss some very relevant and information of changes made wide notification number 14/2022. फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट वीडियो किया था, उसमें नोटिफिकेशन नंबर 9 टू नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑफ 2022 कवर किए थे। नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 बहुत सारे रूल्स से रिलेटेड है। So we'll be dividing this 14/2022 into 2 or 3 parts because एक में cover करना possible नहीं होगा, बहुत lengthy हो जाएगा। So in this part 1, I'll try to cover the pertinent changes with relation to GSTR-3B. That is what we are trying to do in this video. Now friends, as we all are aware that this GST Council meeting has recommended a lot of changes, and when we go through notification 14/2022 para 11, it deals with the changes pertaining to GSTR-3B. So allow me to share my screen because otherwise I'll not be able to explain कि फॉर्म पहले क्या था और इस अमेंडमेंट के बाद फॉर्म कैसा होगा. Just give me 1 minute. Yes. I hope the screen is visible. Now friends, this is the form. You can very well see this, that in para 3.1 of this form, the red marked is other than those covered in 3.1.1. This means that they have inserted one paragraph, one complete table 3.1.1 after 3.1. Now, what will be the relevance of that? That I'll be explaining in due course. Rest of the contents of this form will remain as it is. तो 3.1.1 जो है वो उन्होंने इंसर्ट कर दिया. अब जो इंसर्ट किया वो क्या किया? Friends, this is what they've inserted. They say details of supplies notified under subsection 5 of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 and corresponding provisions in the Integrated Goods and Services Tax, Union Territory Goods and Services Tax, and State Goods and Services Tax Act. So this is a new insertion in the entire form. So what they are saying is कि आप जो पहले टेबल 3.1 में दिखाते थे क्लॉज ए में आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन 0 रेटेड, nil रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, अभी 9.5 से पर्टेनिंग जो सप्लाईज हैं दो शुड नॉट बी शोन इन 3.1, मीनिंग देयर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी सप्लाईज हैं, चाहे उस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स भरना है, चाहे उसमें जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज ले रहे हैं उनको टैक्स भरना है. इन बोथ द केसेस the report will not be in 3.1, it will be now in this 3.1.1. So this is the first change. If you see, clause 1 of this table says taxable supplies on which electronic commerce operator pays tax under subsection 5 of section 9 to be furnished by the electronic commerce operator. तो जहां पे इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज बहुत सारे ऐसी ट्रांजेक्शंस है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज मेड लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स. सो ऑल दोज ट्रांजेक्शंस where the electronic commerce operator has to make the payment of tax will be filled in clause 1. And then clause 2, it says taxable supplies made by the registered person through electronic commerce operator. So these are the transactions wherein I am making a supply through electronic commerce operator on which the electronic commerce operator is required to pay tax under subsection 9. This has to be. हम आगे कुछ डिस्कस करें इसके पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, बिकॉज ने इशू किया
जो 6 जुलाई को इन्होंने इशू किया, एंड दैट इज स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू some mandatory furnishing of the correct and proper information of the supplies in GSTR-3B. So this is very very important circular, circular number 170. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे I'll certainly discuss कि मेरी thought process क्या है ये circular के बारे में, because we are believing the taxpayer, rather it is held by the Supreme Court also in multiple cases. Can it be mandatory? That is a question which we need to answer. Nevertheless, पहले 14/2022 ही the heading they have inserted after the entries of reverse charge, they have inserted the word other than this 3.1.1, and second is 3.1.1 उन्होंने एक पूरा टेबल ही insert कर दिया. Next is 3.2. This is existing. अगर आप ये सर्कुलर देखें, लेट मी एंड अलाउ मी कि 170 जो सर्कुलर है उसको भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर करूं. अगर हम ये सर्कुलर देखते हैं जो 3B के स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड है, तो इस सर्कुलर में एक कंसर्न दिखाया है बोर्ड ने. और फ्रेंड्स वो कंसर्न कुछ ऐसा है कि हम अप्रोप्रिएटली फॉर्म GSTR-3B नहीं भर रहे हैं. The way and the manner it is expected to be filled by us, it is not being done by us, unfortunately. And at the same time they are saying कि अगर ये इंफॉर्मेशन जो हमको पैरा 3.2 में डालनी है, अगर हम ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं डालें, because they are asking for place of supply. So if we are unable to mention the place of supply correctly, then it would lead to the loss of revenue to the interest in which it is, loss of revenue to the state in which the goods or the services or both are being consumed finally, because this is a destination based tax. So this is the apprehension which they are showing in this circular, wherein they are saying that it is our responsibility to fill in the correct particulars in the proper manner while filing GSTR-3B. They have also raised their concern pertaining to the ITC, which is input tax credit table. That we'll be discussing after some time. But para 3.2 के लिए बहुत ही specifically they have inserted and they have showed their concern that this is not being recorded and properly shown, demonstrated in GSTR-3B. So please understand, आप 3.1 में जो entries करते हैं outward supplies की, और अब 3.1.1 में उसके clause 1 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना है वहां पे आप एंट्रीज करते हैं, तो प्लीज अप्रिशिएट कि वो एंट्रीज में सप्लाई विच इज बीइंग मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, supplies which is being made to a composition registered taxable person, and supplies made to UIN holders, ये भी included होती है. And therefore इन लोगों के लिए, see when you are entering into a B2B transaction, registered vis-a-vis registered, so वहां पे तो place of supply आएगा invoice में and the other person का registration number आएगा and you will get the credit. But in these cases when you are making a supply to unregistered person, that unregistered person is certainly he is not registered, so he is not going to avail the credit. But on the principle of destination based tax, this tax amount which is being collected by the supplier in case of interstate supply, it should travel to the state where the goods or the services are being consumed. तो अगर वो place of supply गलत लिखी होगी, so they are now showing the concern that the state to which it actually belongs, जहां पे वो जाना चाहिए वो वहां नहीं जा पाएगा. So therefore they are pressing it hard कि this should be place of supply wise, that you should maintain the records accordingly and show that properly in para 3.2. अगर आप सर्कुलर देखें तो सर्कुलर का पैरा है 3.3, जिसमें 3 सब क्लॉजेस में ये 3 एंट्रीज अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर्स के लिए वो कह रहे हैं. एंड दे आर स्पेसिफिकली सेइंग दैट we need to report the details of such supplies place of supply wise in table 3.2. and similarly composition के लिए भी वो बोल रहे हैं कि place of supply wise we need to show in table 3.2. so this is what they are stating in this circular, and therefore we must as a compliant taxpayer
we must keep this in mind and fill the form to the best possible manner, and the data and the figures which we are mentioning and the place of supply specifically must be correctly mentioned to the extent possible. Now, this is the major change. Friends, table 4, table 4 of GSTR-3B has undergone some changes. Rather, they have इंस्ट्रक्टेड वेरी स्ट्रांगली कि क्या हम गलतियां करते हैं, टैक्स पेयर्स क्या गलतियां कर रहे थे जो नहीं होनी चाहिए, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. सो व्हाट दे आर सेइंग इज इन सर्कुलर आल्सो, बिकॉज आई एम साइमल्टेनियसली टेकिंग द सर्कुलर्स. मुझे कुछ लोगों ने कम्युनिकेट किया कि सर इन्होंने अभी एक सर्कुलर निकाला जहां पे व्हाट दे आर सेइंग इज कि आपको जीएसटीआर 3B में टेबल 4A में आपको सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखानी है, जबकि हम तो उसमें नेट दिखाते थे सर. जो क्रेडिट मिलने वाली होती थी और जो हमको रिड्यूस करनी होती थी, हम रिड्यूस करके नेट क्रेडिट दिखा देते थे. बट इनका ऐसा कहना है कि हमने अगस्त 2020 से GSTR 2B को प्लेस में लेके आए और दिसंबर 20 से 3B ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है. सो द फिगर्स आर बीइंग पॉपुलेटेड ऑटोमेटिकली. सो जो 4A का जो कॉलम है जिसमें 5 सब क्लॉजेस आप देख रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम ISD एंड ऑल अदर ITC. दे आर सेइंग कि इनमें हम ऑटो पॉपुलेट कर देते हैं और वो आपकी टोटल क्रेडिट होनी चाहिए. आपको एडिटिंग का फैसिलिटी है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट दैट शुड कंप्राइज ऑफ द टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, irrespective of the fact whether it is eligible credit or ineligible credit. So therefore 2B में भी हम वैसे ही दिखाते हैं जहाँ पे eligible और ineligible दोनों आती है. So you should take that into cognizance and you should report the entire credit whether it is eligible or ineligible. Then what they are saying is, then the most important part is part B, 4B. 4B में it covers ITC reversed. सो ITC रिवर्स क्लॉज 1 में व्हाट दे हैव डन इज, जो भी आपकी रिवर्सल्स परमानेंट नेचर के हैं, इंक्लूडिंग द ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, आई एम रिपीटिंग, all those credits which are of permanent nature to be reversed, including the blocked credits, must be reported in GSTR-3B table 4 clause B sub clause 1. 4B1 में आपको रिपोर्ट करना है, चाहे वो रूल 38 का रिवर्सल हो बैंकिंग के लिए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, 42 43 हो, या फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हो. ऑल दीज नीड्स टू बी रिवर्स्ड इन टेबल 4B1. एंड इसके अलावा जो भी आपके टेम्पररी रिवर्सल्स हैं जिसको आप दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं, दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 4B2. For example, rule 37 180 days में नहीं हुआ, so you need to reverse. आपके ऊपर illegal है 60, so you need to reverse the credit and then you can claim after receiving the goods in reality, in actual. So therefore others में 4B2 में you will have to enter only those reversals which are getting claimed, which are getting reversed and which are allowed to be or eligible to be reclaimed in the subsequent periods. So this is very, very important, friends. Now they have classified this very clearly कि जो भी आपके permanent reversals हैं वो 1 में आएंगे, जो आपके temporary reversals हैं जो आप reclaim कर सकते हैं वो 2 में आएंगे. So then they will calculate the net ITC available. Now if you can see clause D,
सर क्लॉज डी का हेडिंग दे हैव चेंज्ड, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 से दे हैव चेंज्ड द हेडिंग ऑफ क्लॉज डी. पहले था इनएलिजिबल आईटीसी, नाउ इट इज अदर डिटेल्स. आईटीसी की बात नहीं, अब डिटेल्स पर्टेनिंग टू आईटीसी, these details may not be calculated for the purpose of flowing to the electronic credit ledger. Electronic credit ledger में net ITC available flow होगा as per my understanding, but these are the details which you must show in your returns, and this is a duty which is being casted on you by way of an amendment in rule. It is not merely a circular, and therefore it has to be having a binding effect. So क्लॉज डी में अगर आप देखेंगे अदर डिटेल सब हेडिंग हो जाएगा. उसका फर्स्ट क्लॉज जो पहले 17.5 की बात करता था, दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि 17.5 है. पहले तो आपको सारी क्रेडिट ए में दिखानी है, फिर उसके रिवर्सल्स जो है वो आपको परमानेंट रिवर्सल है 17.5 का, इसके लिए आपको उसने 4B1 में दिखाना है. बट नाउ आफ्टर अमेंडमेंट व्हाट वुड बी द particulars of this particular column? It would be ITC reclaimed, which was reversed under table B4B2 in earlier tax period. So as we have already discussed, 4B2 में जहां others लिखा है वहां पे सारे temporary reversals आएंगे जो आप reclaim कर सकते हैं. तो जब आप reclaim की बात कर रहे हैं, जब आप reclaim करेंगे तो उसकी दो ट्रीटमेंट्स होंगी as per this circular also and as per logical understanding also. कि let's say आज मैं रूल 37 का रिवर्सल करता हूं May month में, I have reversed it. Now in June I am making the payment, so I become eligible for claiming this, reclaiming this rather. तो मैं उस मंथ में उसको 4A5 में दिखाऊंगा, 4A5 में दिखाऊंगा as a reclaimed credit as per rule 37 read with 16(2) second proviso whatsoever, प्लस मैं उसको 4D1 में दिखाऊंगा. So whatever credits that I have reversed and which is allowed to be reclaimed has to be shown for the period in which I am reclaiming it in 4A5 as well as 4D1. This is what is being casted on us as a responsibility, as a duty. And then comes clause 2 जो पहले others था, अब ये बोलता है ineligible ITC under section 16 subsection 4 and ITC restricted due to place of supply provisions. So therefore कोई भी ऐसी ineligible ITC है जो आपको 16(4) के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए, you need to show it here. रिवर्सल्स तो आप अदर्स में कर ही देंगे, या परमानेंट रिवर्सल्स अगर हैं तो आप क्लॉज 1 में 4B1 में कर देंगे. So all ineligible ITs needs to be shown here. On any ITC, let's say आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपने होटल यूज किया, you are registered in Gujarat, so Delhi will impose SGST and CGST of Delhi. So those credits become an ineligible credit to you. So therefore now this is an additional duty and responsibility which is casted on the taxpayer कि अब आपको वो ऐसी कौन सी ITCs हैं जो ineligible ITC हैं वो भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी as per this amended format of GSTR-3B. So please bear in mind, friends, this becomes very very important because now they are casting a responsibility with a greater detail. और उन्हें अब क्लियर बोल दिया है कि सर अगर आप कोई क्रेडिट लेते हैं तो आपको टोटल क्रेडिट लेना है, forget about eligible, ineligible, blocked. You claim the entire total credit in 4A in sub clauses 1 to 5. देन जो रिवर्सल्स आपको करना है उसमें आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है. कैटेगरी 1 परमानेंट रिवर्सल्स, कैटेगरी 2 रिवर्सल्स विच कैन बी रिक्लेम्ड. सो आप उसको अदर्स में दिखाएंगे. देन नेट आईटीसी अवेलेबल जो आपकी रहेगी दैट यू कैन सर्टेनली टेक टू द इलेक्ट्रॉनिक और दैट विल बी सेंड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. Then comes clause D, which is merely as per my understanding for reporting purposes, because it will not be taken into consideration for the calculation purposes of electronic credit ledger. So उसमें clause 4D1 में पहले आएगा जो ITC आपने reclaim किए इस पीरियड में, जिस पीरियड का आप रिटर्न भर रहे हैं pertaining to the earlier tax period credits.
जो आपने तब रिवर्सल की थी और अभी आप रिक्लेम कर रहे हैं. So that needs to be shown into 4A5 and 4D1. And then ineligible credits, maybe with respect to 16.4 or maybe with respect to the place of supply provisions or any other reasons. So that needs to be shown in 4D2. So this is how the calculations will be done so far as GSTR-3B is concerned. And therefore, it is very, very important for all of us to understand one clarification which they have given in para 4.4 of the circular 170. This says it is clarified that reversal of ITC of ineligible credit under section 17(5) or any other provision of the CGST Act and rules made thereunder is required to be made under table 4B and not under 4D of form GSTR-3B. So any reversals, any ineligible credit which needs to be reversed, पहले आप उसको 4B में दिखाएंगे, ना कि आप उसको 4D में दिखाएंगे. This is something which is very important because 4D is only for the purpose of reporting. This is what I believe. So friends, this was the changes which they have made in form GSTR-3B, and these are the two instructions which they have added, which we have already covered. Instruction number 4 and instruction number 5. Instruction number 3.1.1 से related है. An electronic commerce operator shall not include in 3.1a above the supplies on which electronic commerce operator is required to pay tax under 9(5) of the Central Goods and Services Tax and shall report such supplies in 3.1.1 clause 1 above. And similarly the second कि उनको 3.1a में नहीं दिखाना, 3.1.1 clause 2 में दिखाना है. So this is what is amended in GSTR-3B. Now the question which is being posed to me by many taxpayers is, सर ये अमेंडमेंट तो हो गया, अब ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल कब से होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो मेरे हिसाब से 5 तारीख को आया था, 5 जुलाई को. तो दिस बिकम्स एप्लीकेबल फ्रॉम 5 जुलाई 2022. अभी हमने जून का रिटर्न भरना है, जून का जो GSTR-3B भरेंगे तब से ही एप्लीकेबल होगा या आगे सब्सिक्वेंट पीरियड्स में होगा. सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी आंसर पर्टेनिंग टू दिस बिकॉज वी नीड टू वेट एंड वॉच. अगर वो पोर्टल पे अमेंड कर पाते हैं सो सर्टेनली जुलाई से होगा, बिकॉज इफेक्टिव तो हो गया है. वंस इट इज अमेंडेड इट इज इफेक्टिव. नहीं तो we'll have to wait and watch and we need to wait for it. But conclude करने से पहले I need to share one very important aspect with you, and that is GSTR-3B was simple. Originally जो इसको लेके आए थे that was with the concept कि GSTR-3B बहुत सिंपल रहेगा और ये एक समरी फॉर्म है. Then finally what they have done is they have made this as return under section 39. We all are aware of that. Issue that arises is कि now slowly and gradually they have started mandating of things on the taxpayer. जैसे इन्होंने भी 3.1.1 डाल दिया उसकी डिटेलिंग के लिए. They have restricted us कि 4B1 में क्या डालना है, 4B2 में क्या डालना है. अब वहां पे अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो दैट विल लीड टू अ नॉन कंप्लायंस एंड not proper reports and fines or whatever will be applicable to us. The only point which I am trying to share with all of you is that in spite of simplifying this, in spite of simplifying the law, the form, I think that they have casted additional responsibilities on the taxpayer. And to some extent, this has been complicated. I'm not sure किस extent तक, but yes, apparently देखने से यही लगता है that GSTR-3B also is getting complicated because now a lot of restrictions are being posed, a lot of information is being asked from the taxpayer. Mandatorily he will have to provide. Now lastly वो question जिसे मैंने start किया था कि normally a circular is not binding on a taxpayer. Can we say that this is binding? I have two arguments to this. One, notification 14/2022 is very clear.
वहां से जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वही उन्होंने 170 सर्कुलर में एक्सप्लेन किया है कि what does they want, but the captions and the changes which are being made in GSTR-3B is wide that notification. So therefore that notification is absolutely binding on us. So we need to follow that. Number one. Number two, मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के केस में वी कैन वेरी वेल से दैट दैट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट. जैसे अभी हम दूसरा सर्कुलर पढ़ेंगे फेक इनवॉइसेस का, उसको हम शेयर करेंगे, तो वो पढ़ के ऐसा लगता है कि यस इट इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट नॉट ऑन अस. बट जहाँ पे कंप्लायंस बोला जाता है, एंड दिस इज अ कंप्लायंस लॉ, वी आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस लॉ. वहां पे मेरा ऐसा मानना है कि दिस सर्कुलर टू सम एक्सटेंट इज सर्टनली बाइंडिंग ऑन अस, एंड देयरफॉर वी मस्ट अबाइड विद what the circular is telling and how the circular is envisaging the reporting to be done in GSTR 3 capital B. With this, friends, I'm thankful to each one of you for giving me the patience hearing, and I hope that this certainly these views of mine and this video will add some value to this amendment of GSTR 3B. Thank you, friends. Thank you very much.